Hi everyone. So today I have the honor of introducing to you Dr. Adarsh. He is a amazingly intelligent boy and a very dear actually doctor who has got a rank 1 in INICET May 2022. So INICET, to give you a background on the level of this achievement, INICET is the most sought after exam by doctors. It is probably the toughest. I am sure others may or may not agree after getting a rank 1, but it's probably the toughest exam that a doctor might face after his MBBS, and to it's a entry gateway to all the prestigious institutes in the country, including AIMS, PGI, JIPMER, and MHANS. So to get a rank, single digit rank, 1 rank in such an institute is amazing. So others, how are you feeling? What was your reaction after the result? I was very happy and also shocked because before my rank above and below there were rank of 4,000 and 12,000. So you have to check again ki you're not mistaken. Did you take a pen and try to see, okay, is it in the straight line? It was highlighted, so I didn't do that. I know. So what was the, like, when you gave the paper, so a lot of students who gave this year's INICET paper felt that the paper was slightly on the atypical side, what they expect out of a AIMS exam. But when you look at INICET with all 4 institutes, so a lot of people had the idea that this was moderate to tough difficulty level, and so they want to know from rank 1, what was your opinion of the paper when you were giving the paper? It was same. Matlab, I won't say that it was typical. During the exam when you get any atypical questions and then you are worried, and so that feeling came to me also कि many questions are कि ये कैसे आ गया, मतलब ये तो कभी आता ही नहीं था. So उस तरीके का था. और उसके अंदर जब हम पेपर दे रहे थे, तो क्या ऐसा लगा कि यार ये मुझे कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है? आपने अटेम्प्ट कितने किए? डिड यू मतलब चेंज इट इन द एग्जाम? बिकॉज व्हेन यू गो टू द आईएनआई एग्जाम, यू गो विद अ सेट माइंडसेट कि ऐसा करना है. So according to the मतलब जो teachers and seniors ने जो बताया था कि you have to attempt more, मतलब attempt rate has to be high. So I attempted around 195 questions. और बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे मतलब जिसमें मतलब नहीं प्लस माइनस वाला, जिसमें आपको एक ऑप्शन रूल आउट करने के बाद सेलेक्ट करना था, तो आप सारे क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते थे, अदरवाइज मतलब वैसे भी रैंक नहीं आती, मतलब तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा अनलेस यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी ऑप्शन. सो आई अटेम्प्टेड 195 क्वेश्चन देन. So the 5 questions that you left in the paper were the ones where you had no idea about all 4 choices. हाँ. If you were able to rule out one, you tried to find the answer. Yep. Right. And any particular observation on the subject-wise distribution, like again, like slight atypical, where it has happened in the past also that the pre-clinicals had more representation than what we would expect out of a central exam, that medicine आएगा या clinicals आएंगे. So what was your opinion on it? So most of the questions from मतलब any first year वाले बहुत सारे questions थे, even second year की pictures like जो यॉर्क एक्ट में बॉडीज वो सारे होते हैं, एंड देन सो और मेडिसिन के क्वेश्चंस आप ढूंढ रहे होते हो कि जो जल्दी हो जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस कम होते हैं. सो दैट इन दैट वे इट वाज ग्रेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्स्ट सेकेंड ईयर्स. तो सेकेंड ईयर की फार्मा जैसे वो काफ़ी न्यू ड्रग्स, जैसे अब जो रिसेंट एंड है कि न्यू ड्रग्स पूछने का, हर बार 1-2 नए ड्रग्स आ सकते हैं, तो दैट हैड एन एडवांटेज बिकॉज आई हैड सीन एनी न्यू ड्रग्स की लिस्ट लास्ट डे और 2 days बैक. सो उससे 1-2 क्वेश्चन सही हुए मतलब. तो So would you recommend this to future aspirants also कि न्यू ड्रग्स देख लो लास्ट में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? हाँ, मतलब लास्ट में लिस्ट होती है, हर जगह लिस्ट होती है, मतलब जो रिसेंट वाले हैं लास्ट दिन एक क्वेश्चन आना ही, मतलब हर 2-3 बार से आ ही रहे, तो एक बार लिस्ट देख लो तो आपको एटलीस्ट ऑप्शन रूल आउट हो जाएंगे, पता चल जाएगा ये तो होगा ही नहीं, मतलब सो उस तरीके का दैट हेल्प मी मतलब. एंड आई थिंक जेनेटिक्स का भी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहा पेपर में, जो यूजुअल से ज़्यादा था. So I think with what my understanding is, and I'm sure others will also agree, is that this is like a multi-institute contribution kind of a paper. So we could see that there are some contributions from PGI Chandigarh, some contributions from JIPMER in the paper, and I feel that people who are looking at previous year questions, they should, when you're looking at INICET previous year questions, you should also look at the older AIMS, PGI and JIPMER paper solutions which are available in your app, because
that will give you an idea on what are the favorite topics of those institutes now, because once INI is happening, so the representation is getting a little narrow. But if you look at a older JIPMER paper, you will find a lot of atypical questions there. I have a different view. मतलब that may also dilute the INICET pattern also, because reading too much for the INICET pattern, usual INICET pattern, and then again if you are reading too much, so you would not just seeing the paper, I think, would be if you have time, if you just seeing the questions you can visit, but not मतलब कि वो सारे topics नहीं उनके पीछे नहीं पड़ जाना है. Definitely, you know, do not run after anything atypical, because if you run after atypical, what will happen is you will only do one question 199 के लिए तैयारी नहीं हो पाएगी. So I think so, you know, so far, you know, we have gotten an hang about what was this paper all about from the mouth of the person who has actually done the best in his paper, is the rank 1 in this exam. So when you hear him, you can actually get a lot of inspiration and a lot of ideas for future. So Adarsh, I also want to know that you have been a DAMS, you know, foundation course student in Delhi, and how was your experience with the face-to-face classes? I think you were in the pre-COVID era in the classroom program. So how was your experience with the classes? So I attended मतलब around 9-10 subjects with the DAMS at the Gautam Nagar Center. So the faculty was very good, and so the DAMS notes are very good. So मतलब most of the notes I had in digital form. जिनकी hard copy थी उनका भी digital करके. So I read that only मतलब for the props also and for this also. Some things मतलब extra अगर बहुत important है, so you add in them after reading from the book or after seeing the new questions. So the base was that. Do you think making your own notes helps you to revise later on in a rapid manner, and also helps you to, you know, pass the professional exam, especially when you talk about third and fourth year? Like first and second year is like more sorted in colleges. It's like, because when you are in first year, it's more like school, extended school. Yep. But when you come to third, fourth year, it feels like college, like you're on your own. And at that time, do you think that those notes help? Yep, मतलब in notes मतलब you write important things, and also you write in your own way, like if someone writes like in flowchart or someone highlights like that, so it does help मतलब. So except for the first year and second year, I had all my notes मतलब on third year subjects, fourth year subjects, I had my own notes. So how do you highlight, and like what is the style of rank 1 is what people would want to know. Like when you are writing in a classroom, making your own notes, would you write a paragraph and make a arrow and a flowchart kind of a thing, or would you have multicolor pens? What is it that the rank 1 thinks like? No, I usually write in the iPad, so multiple color option is there, but that is not much to be focused. For learning, I think that the revision, and if you have the good luck, you have friends with whom you can discuss the things. So that is the best way to learn, to remember actually. So if you can discuss with someone or recall, you that way helps. And good notes, clear notes are there even with single pen. I don't think that would, because my friend like Heath, he usually makes with one essay. So it does not matter much. But what really matters is that you have made it on with your own style. So you know, it is like easy to read after 2 years. Like I met a lot of students recently who had not made their own notes, but actually purchased notes. So what was happening is, after 2 years, even if you read it after 2 years, they were finding it difficult to understand what is written exactly there, because it is not written by them. Because you are making some notes in third year, and now you have to revise 2 years later, 3 years later. If it is written by somebody else, it may not talk to you in the similar manner as compared to your own handwritten. So speed of reading pages becomes very slow, because मतलब हो सकता है कि एक पेज में मैं जितना कंटेंट मतलब कंसाइज वे में लिखता हूँ, एंड देन मतलब जिस तरीके से लिखता हूँ उसमें मुझे एक बार में वो चीज़ दिख जाती है पूरी, कि उस टॉपिक के बारे में क्या है. सो व्हाट द रिटन नोट्स में डू कि उसमें किस वे में मतलब लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है या एक किसी तरीके से, सो वो वाला नहीं आ पाता है, कि पता नहीं चल पाता है. Or any particular teachers you remember from the classes, and you were a part of the foundation course? Any teachers or any moments that you remember from your DAMS Gautam Nagar days? So I attended your radio, so that I revised from that only. Then Dipti Bahal ma'am's Ops Gynae I attended at Gautam Nagar. Then Tushar Mehta sir. So ऑर्थो वॉज फन, वो काफ़ी अच्छा वो होता था कि ऑर्थो में मज़ा भी आया था. एंड देन सिद्धार्थ सेठी सर टॉट पीट्स,
and ENT में अरोड़ा सर. So I would like to mention about ENT कि सर मतलब जो डायरेक्ट वे में जो मतलब जितना पूछा जाना होता था वो डायरेक्ट नोट्स में लिखा होता था कि ये है यानी 14-year-old boy is angiofibroma, 40 to 60-year-old is inverted papilloma. So वो काफ़ी यानी उस समय जब नोट्स बनाया था तब उतना अच्छा मतलब उतना वैसा नहीं लगा था important, but when you are solving questions and you you get to know the importance of epidemiology की अगर ये एज है तो वो कुछ चीज़ें तो वो काफ़ी डायरेक्ट वे में जो सर ने लिखा है तो वो काफ़ी अच्छा था. And absolutely, like I keep meeting a lot of students who would come back and say, सर जब हम क्लास में कर रहे थे ना तो हमें इतना वैल्यू नहीं समझ आ रहा था उस बात का, लेकिन बाद में जब देखा कि ये तो कीवर्ड पहले ही बता दिए इन्होंने, तो वो एग्जाम इज अबाउट कीवर्ड्स. हाँ. एंड लाइक एमसीक्यू एग्जाम के अंदर इफ यू डू नॉट नो हाउ टू क्विकली पिक अप देम, सो देन यू विल स्ट्रगल विद द सेंटेंस. एंड आई थिंक toppers like you who get a rank 1 have a very good eye to pick up the key things in the question. So yes, I focused on that कि सारी चीज़ें मतलब वो keywords पता हो मतलब questions में कि last line पढ़ने के बाद वो keywords दिख रहे हैं कि नहीं मतलब तुरंत questions में वो options क्या हैं, तो वो उस तरीके से ही किया था. Do you think starting early also helps to get like although we can say early, but right now I think third year is the norm almost for PG entrance preparation today in the country, but as compared to somebody who starts in internship, if you start in third year in the foundation year, do you think it helps to spread out the things more in a more easy manner? So for me early is from after second prof. So if you after second prof you should मतलब यानी जो subjects हैं मतलब final year subjects and third year and fourth year subjects जो हैं उनको अच्छे से पढ़ना, वो that helps in prof also and that helps in the exam also. Before that मतलब इतना उतने सीरियसली मतलब पढ़ना तब भी है, सारी बुक्स स्टैंडर्ड एग्जाम यानी क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पहले भी पढ़ना है और बाद में भी पढ़ना है, बट उससे पहले एग्जाम ओरिएंटेड इतना ज़्यादा नहीं होना है बिफोर 2 years मतलब बिफोर 2.5 years जो पैथ तक है. So after that, and actually it's very important what he is saying. Lot of students, what is happening is they forget the value of books like Genong, and I think when I was in my own time also, Genong and Robbins were my favorite books. Yep. I think if you do them, I think even if you don't do Harrison's, then it is okay. Although it is little bit of an exaggerated statement, but I'm sure he must have done Harrison's at much more depth at rank 1. But if you do Genong and Robbins, you are sorted. I think. What do you think? Hi, yes, I read Genong, I read Robbins. मतलब even for revision, you don't need to see anything else. मतलब for profs also I revised from the Genong. So from Robbins. So मतलब Path was one of my best subjects मतलब कि so Path that is helped. actually the central subject of MBBS. I think it is where everything is rotating around it actually. And also one thing that I want to mention here is to clarify to students who are going to appear for NEET PG in the next 7 days or who are going to appear in the next November INICET. What Dr. Adarsh is saying is when you are in first year MBBS, it is good to read Genong. But he does not mean when you have a 7-day later NEET PG exam, then don't go after a big textbook, you will not be able to finish anything. So important thing is to keep the entire advices that the topper is giving you in the correct context. It is at what year are you in would be the key determinant of how much deep you should go into one particular subject, and then smartness should always be there when we are preparing for a competitive exam. It's a competition. You can't say that in the last 7 days because Dr. Adarsh said they have started reading Robbins. No, you have to finish the entire syllabus. So I just wanted to clarify, because a lot of people panic in the end and they say, sir, I have not read Robbins, should I start now? I have to tell them then not now. Now is not the time. And so others, now I know that this is probably the last competitive exam you are giving, and after this you may not be writing NEET PG, but you may write out of interest. But so if you had to, what would have been your go-to things, or what would have been your idea for the last 7 days? I would have seen previous year's questions in one day, just go through the quick key previous years में क्या क्या है, and then I would quickly revise the notes again. So again, sticking to your own handmade notes and look at the previous year questions. Don't get disheartened by the number of repeats here, because I see some students panicking कि इस बार repeat कम है. But if you look at the topic repeat, and I think I'll ask Adarsh also this, if you look at not the direct question repeat, but if you look at the topics, you will find some
value of looking at the previous year question even for this INICET. But let's see what others say. For some subjects I think that the topics वही topics आते हैं. For some subjects they usually repeat the same questions. मतलब like anatomy they usually ask कि जो हर बार पूछा जाता है वही topics हर बार आते हैं. कुछ subjects में होता है कि एकदम से नए questions होते हैं. मतलब तो आई डोंट थिंक कि मतलब वो पूरे में फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी में डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी में तो मेरे क्लास के एंड में पहले ही बोल दिया था ये आएगा. मतलब मुझे बिकॉज इट्स बीन लाइक अ ट्रेंड हर 2-1 साल में आ ही रहा है एंड ऑल दोस. So I think it's like do not this is just a message for people who have a 7-day later exam and who are watching this interview out of curiosity and out of to seek inspiration. For in the last 7 days, do not forget to look at last 3-year NEET PG papers. It gives you some ideas. It helps you to imagine what the real exam would feel like. It may not be absolutely repeated. That is true, and that is how the paper should be. But you get an idea that what kind of exam board are you dealing with. That is the same thing that people do in America also, that you have to get a feel of the exam board at least, not to expect the verbatim repeat. So Adarsh, I also want to know from you now, that you come across as a very sorted, very down to earth, very focused student. But are you always so calm and controlled, or you have your own ups and downs, and if yes, then how do you manage them? I have my ups and downs. मतलब कि just like last year INICET also I had given, so I had scored 554 I think. So after the COVID, मतलब I had completed my internship in January last year, and then just after the sorry, not internship, prof exam. Just after 5 days my internship started, so I started studying, and for the first month I studied मतलब very with much focus. मतलब so in 1 month I completed कि जो first second years के notes बनाने वाला काम है वो कर लिया था. Then because I got burnt out कि नहीं क्या नहीं कर रहा हूँ मैं. अभी तो मैंने 2 महीने पढ़ा था, फिर से वही सारी चीज़ें, मतलब फिर से पढ़ना वही, मतलब it gets monotonous. So the key point, मतलब what I'm trying to say is कि you have to read consistently. Do not जब एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि 16 घंटे पढ़ने लगे, बट कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो आराम से मतलब अच्छी रैंक आ जाती है. सो बीच में ब्रेक्स लेने भी जरूरी हैं, बहुत बड़े ब्रेक्स नहीं, बट सम डे की अगर 15 डेज के बाद एक डे ऐसा, अगर स्टार्टिंग अर्ली ऑफ द प्रिपरेशन है कि 1 डे का ब्रेक है जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आराम से मतलब जो आपको करना है वो कर सकते हैं. सो दैट हेल्प्स एक्चुअली. मतलब ऐसा नहीं है कि ये बात मुझे पता नहीं थी, बट ये बात मैंने फील नहीं की थी. कई सीनियर्स ने ऐसा बोला था कि मुझे एग्जाम देने से पहले, जब मैंने उनसे पूछा था कि नेक्स्ट 7 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो उन्होंने बोला था ब्रेक्स ले लेना एग्जाम के बाद, प्रॉफ के बाद, लेकिन वो नहीं हो पाया. सो आई जस्ट मैंने छोड़ दिया, मतलब कि मैंने सोचा बाद में अभी करता हूँ थोड़ा ब्रेक, यानी फिर बड़ा ब्रेक हो गया. सो वो नहीं करना है. कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है. जिस दिन अगर लगे, मतलब जिस दिन बहुत ज़्यादा बर्न आउट फील हो रहे हैं, उस दिन थोड़ा कम पढ़ ले. दैट इज गुड कि देन जस्ट लिविंग ऑल टुगेदर. So I think what he is saying is take care of your mental health also. I think it's very important कि ना कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि हम मशीन है, हम कर लेंगे. और ख़ास तौर पे हाई अचीवर्स के साथ में ज़्यादा देखता हूँ, जो होशियार बच्चे होते हैं, इनके वो अपने, हमें ऐसा होता है कि यार हम कर लेंगे, 1 घंटा 2 दिन है, 5 दिन है, 15 दिन है, कर लेंगे, ट्रॉट पे करेंगे, महीना कर लेंगे, ब्रेक की भी ज़रूरत नहीं है, काम भी कर लेंगे. लेकिन कभी कभी क्या होता है, if we don't recharge, we have to let the concepts that we are reading, whatever we are studying, we have to let it settle down also ना. वो फिर वो प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है. सो आई थिंक ही हैज़ रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि यू हैव टू पेस योर स्टडी. मोमेंटम को धीरे धीरे बिल्ड करना है, एग्जाम के पास जाके पीक करना है. ऐसा नहीं कि पहले पीक हो गए फिर बर्न आउट हो गए. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट ही डिड डिफरेंटली दिस टाइम. आई थिंक ही पेस्ड हिज स्टडी. सो पहले मतलब आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट 10 डे रिविजन, क्योंकि लास्ट 10 डेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स पहले से पता होते हैं, बट इवन टू रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट आपको 10 दिन में वो चीज़ें आपके आंखों के सामने से जानी इंपॉर्टेंट है. सो आप 10 दिन लास्ट के सोच के चलिए कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं, अगर वो आप लास्ट 10 डेज में नहीं पढ़ सकते, सो मतलब कि वो बहुत, मतलब उतना एफिशिएंट नहीं है. सो 10 दिन होने के पहले मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में 10 डेज में मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, मतलब कि मैं 10 दिन में कैसे करूंगा लास्ट दिन में. सो दैट इंपॉर्टेंट कि रिवीजन आखिरी दिन करना है, और आखिरी दिन क्या रिवाइज करना है वो भी इंपॉर्टेंट है. लाइक सब्जेक्ट्स जैसे INICET के लिए हर बार जैसे फॉरेंसिक में जो इजी क्वेश्चन होते हैं, बट यू रीड एट द लास्ट डे एंड दे जस्ट कम 4-5 क्वेश्चन यू गेट करेक्ट.
एंड देन लाइक फार्मा, आई फाइंड फार्मा वेरी हाई यील्डिंग, मतलब क्वेश्चंस कभी बहुत यानी एक दो क्वेश्चंस जो नए ड्रग्स होते हैं वो लिस्ट देख लो, वरना सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं अगर यानी आपने देखा हो मतलब पिछले एक दो दिन में. एंड विद इन लास्ट 10 days आई थिंक कि रिवाइजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज कंपल्सरी, मतलब इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पूरा रिवाइज कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है. मतलब मैंने शॉर्ट में जल्दी जल्दी कर लिया था पूरा रिवाइज, बट फर्स्ट सेकेंड ईयर तो करना ही करना है मतलब. Or towards the end, resource like DVT can help. The DVT or the DVT PDFs can help to go through the topic or the high yielding topics, because कभी कभी क्या होता है आखिरी 7 दिन में सारे सब्जेक्ट्स करने मुश्किल हो जाते हैं एक साथ. तो अगर उसका खाली हाई यील्डिंग पॉइंट देख लो तो एक कॉन्फिडेंस आया था कि मैंने सब टच कर लिया. हाँ, मतलब वो सबका अलग अलग शायद होता है. मतलब मुझे ऐसा होता है कि जहाँ से मैंने पहली बार पढ़ा है सो वहां से ही मैं जल्दी पढ़ सकता हूँ. मतलब उस वो सब्जेक्ट्स में जैसे ऑब्स गाइनी है. आई थिंक दैट इज द वैल्यू ऑफ मेकिंग योर ओन नोट्स. हाँ, क्लास में अगर बैठ के हमने नोट्स बनाए अपने हिसाब से बनाए तो देन इट्स लाइक, क्योंकि वो आई थिंक पूरा पिक्चर की तरह स्नैपशॉट की तरह पेज क्विक मूव कर जाता है. सो उसमें यू आर नॉट रीडिंग एवरी लाइन एक्चुअली. सो जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो मार्क कर लेते हैं कि मतलब कि ये चीज भूलने वाली है, सो यू मार्क इट कि ये तो लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लेना है. मतलब तो जब आप पेज पलट रहे होते हैं तो वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो जल्दी से आप वो देख लेते हैं कि कुछ याद करने वाली चीज होती है एग्जैक्टली कि ये नहीं. और तो वो सारी चीजें मतलब आप पहले रिवीजन पहले उसमें कर सकते हैं. उसके बाद मतलब आप रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं कि जिसमें हाई यील्ड रिसोर्सेज हैं, या फिर अगर आप अपने ही उसके साथ कंफर्टेबल हैं जिसमें आपको फास्ट हो. मतलब आपको पहले देख लेना है कि आप रिवीजन, आपको ये नहीं कि सिर्फ एक बार रिवाइज करना है, एक बार रिवाइज करने से नहीं हो पाता है. मतलब तो एक बार लास्ट में रिवाइज करना है, उसके पहले एक बार रिवाइज करने से आपको पता चल जाता है कि आप कितनी जल्दी कर पा रहे हैं. So how many times did you revise before this INICET exam, like if I may ask? मतलब आई रिवाइज्ड एटलीस्ट मतलब 3-4 times I revised. मतलब. And during the exam, were you able to finish it well before time, or you got to review the entire paper again or not? नहीं. So speed was my weakness. So for that I had मतलब जो मैंने ग्रैंड टेस्ट मतलब दिए, so the only focus of mine was not rank, not questions, कि मैं सारे questions पढ़ के ऑप्शंस पढ़ के I was am I able to complete in the given time or not. सो जब मैं यहाँ पे करता था तो 2.5 hours में या हो जाता था. एंड इन द एग्जाम मतलब दैट स्ट्रेच टू मतलब जस्ट 5 minutes लेफ्ट देन पेपर कंप्लीट. सो दैट वाज एन इशू. एंड actually very important point, and that is again the same thing I will advise to people who are appearing for NEET PG exam also. You cannot imagine that when you, like, even the rank 1 is saying that when he is giving a paper at the comfort of his home versus the exam center, time expands. So you have to practice in the last week also, so that you find yourself in form, you build your stamina to give the exam. Especially in INICET, the time, although it is just 200 question, but I always find it is not 200 question, it takes time. मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपके 4 मिनट चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलेगा कि यू वर स्टक एट दैट क्वेश्चन फॉर 4 minutes. सो वो गलती नहीं करनी है. मतलब सो उसके लिए पहले से आपको थोड़े टेस्ट देने का एक वो इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे लिए था कि स्पीड, हाँ, टाइम मैनेजमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्वेश्चन जल्दी रीड कर रहे हैं. अगर नहीं आपको बिल्कुल लगे तो आप उसको बात के लिए वो कर दें. लेकिन अगर मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे पता था मेरी स्पीड स्लो है, सो आई डिड नॉट डिसाइड कि मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करूंगा. मतलब मैं उसको सेव एंड नेक्स्ट करूंगा. बाद में अगर इतना टाइम मिला कि मैं पूरा यानी देख सकता हूँ तो फिर देखूंगा, वरना मैं सेव एंड नेक्स्ट. वरना पता चला कि लास्ट में वो क्वेश्चंस भी नहीं हुए. Did you write some questions on the your number on the your admit card or somewhere, so that you're not marking for review, लेकिन देखना था बाद में, ऐसा कुछ? या मैंने ऐसा सोचा था, बट उस समय ऐसा हो नहीं पाया. मतलब उस समय था कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं जल्दी सामने वो करें. And that is the right thing to do. Keep it simple in the exam. Don't complicate it too much. Especially exams like INICET, if you mark too much for review, you might actually kill the entire opportunity, because if in the end you don't get time to save, so whatever you were thinking also is lost. What about how did you manage to reduce your silly mistakes in this paper? Did you did you tell yourself that these are the kind of questions where I will not overthink or underthink? Like, did you have a strategy about it, or? हाँ, this is very important कि not overthinking is very important for INICET. Like some even there was a question of fish, यानी कि wasp, उसमें कि पहला कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो मैं पहले पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कराऊंगा क्या, इतना नहीं सोचना है.
व्यास फिश उस पे क्वेश्चन उस पे है, आपको डायरेक्ट फिश ही मार्क करना है, मतलब ऐसा कुछ था, मतलब एक दो क्वेश्चन थे। कभी कभी हम ओवरथिंक करते हैं कि एग्जामिनर ने ऐसा ना सोचा हो, वैसा ना सोचा, जबकि एग्जामिनर ने कुछ सोचा नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। हाँ, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो मैंने भी सीखा, मतलब कि क्वेश्चंस पिछले साल के देख के कि आंसर्स आर सिंपल, मतलब कि जो डायरेक्ट सोच के आ रहा है वो. So Adarsh, you had a 500 odd rank in the previous INI exam, and this time you have a rank 1. So what were the differences in your exam day strategy? Like, were you more aggressive, or were you managing the time better, or definitely you had studied more. That part is clear. That in the previous time you had missed pace. Your pace of study was aggressive in the initial phase. Then not studied after that, not studied 6 months. So what was any particular thing that you improved in your exam skill? Because lot of people would resonate with you कि यार इसने भी रॉबिन्स पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, वो बोलेगा कि मैंने भी ये किया, मैंने भी ये किया, लेकिन फिर भी मेरा तो बोलेगा मेरा 1 नहीं लग रहा, इसका आ रहा है. तो कुछ एग्जाम स्किल में कुछ एक्स्ट्रा? Last year I didn't give any test, so this time I gave test. So कुछ टेस्ट मतलब for speed देखने के लिए, so that helped. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछली बार बिल्कुल भी नहीं देखे थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है कि इवन मतलब मान लिया इस बार 5-6 क्वेश्चन थे, बट उन 5-6 सेकंड से आपके 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते हैं. सो इट सेव्स टाइम फॉर द क्वेश्चंस की जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है. सो वो हेल्प करता है. तो इस बार तो कम, बट इवन दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, मतलब कि करने हैं. सो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने का डिफरेंस पड़ा. एंड माइंडसेट वाज डिफरेंट, कि मतलब कि पिछली बार यानी बिल्कुल मन नहीं था, इस बार यानी आराम से ये था कि पढ़ते जाना है, मतलब वो नहीं ज़्यादा सोचना भी है कि रैंक क्या लानी है, मतलब बट पढ़ते जाना है. आई एक्सपेक्टेड कि मतलब मुझे मेडिसिन या पीट्स यानी ऑप्शंस में थे, सो कि विद इन 100 रैंक आ जाएगी, सो आई वुड गेट. सो ज़्यादा टेंशन लेके होता है तो फिर वो भी गड़बड़ हो जाते हैं. Definitely, when you overthink about the outcome, or I think the best part about Adarsh is that he is able to understand what went wrong, and he's able to analyze it, and then he improved massively in the subsequent go. You can also look at him as an inspiration, that suppose you have not done well in this INI exam, but if you are able to zero down on what went wrong in your preparation, you can improve upon it. So I think these are a lot of inspirations and lot of advices that you can take home from rank 1 INICET exam. Dr. Adarsh, he is a very dear student, and a very, very humble boy, and a very, very intelligent boy. And I think he has a very smart head on his shoulders, and we will hear more about him in future also. So when he says something, he is saying a lot of things which are coming out of his mouth very automatically, but these are gems which will help you to think about it. Like if you imagine, from a rank of 500 to 1, he improved his performance 500 times, actually speaking. That from a rank of 500 is a 1. So suppose today your rank is 5000, that means there is still a possibility for you to improve, but the difference is many people, they do not analyze their strengths and weaknesses, and he has done it very beautifully, and he is not afraid of them, he is not shy of them. He said ये मेरे गलती हो गया कि मैंने इस बार अपने आप को ब्रेक नहीं दिया, अभी मैंने पहले ही प्लान कर लिया, या मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे, अब की बार पहले ही प्लान में डाल दी. So his approach is very pragmatic, and that is what has gotten him rank 1 this time. He is intelligent, and he has read good books at good times. All these things, tiny things, are adding to give a massive effect. It's like ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज है जो जादू है, लेकिन वो सब मिलके जो है ना वो इम्पैक्ट ला रहे हैं. कि गेनोंग भी पढ़ा फर्स्ट ईयर के अंदर, फिर रॉबिन्स को भी पढ़ा, पैथोलॉजी को पसंद भी किया, उसको प्यार भी किया, फिर क्लिनिकल भी किया, फिर अपने खुद से नोट्स भी बनाए, टेस्ट भी दिया, सब जुड़ के बन रहा है. So you have to find all the components, and you have to think which component you are lacking. So now I'll ask Dr. Adarsh to give a message or give some advices for students who will be appearing for November INI exam. Like you are the rank 1 of the May INI exam. Suppose you were appearing for the November exam. What topics will you keep in mind, or what things, academic things you will keep in mind कि ये ना मिस हो जाए, ये ना मिस हो जाए, so that they can note it down right now. टॉपिक्स एग्जैक्टली आई वुड से अगेन कि स्टिक टू द मतलब जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन्हें गलत बिल्कुल नहीं करना है. मतलब जैसे लाइक 99 to 100% वो आपके सही होने चाहिए और उन पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए.
सो वो अगर किसी ने नहीं किए हैं तो वो आई वुड से फ्रॉम 2015, बिकॉज बिफोर 2015 पैटर्न वाज डिफरेंट, मतलब वो भी आपको देखना है, क्योंकि जैसा आप 2014 का पेपर देखेंगे उसमें ऐसी चीजें पूछी गई हैं कि जो आपको बहुत ही अलग लगेंगी। सो 2015 के बाद से सारे पेपर देख लें, मतलब 2015 का भी शायद एक दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन, सो वो देखने से यानी हेल्प मिलेगा। एंड देन 2-3 बार अभी भी मतलब टाइम बहुत होता है, मतलब मैंने फील किया कि इवन स्टार्टेड जनवरी, सो 4-5 मंथ्स में भी अगर आप सही तरीके से प्लान करें तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। एंड रिवीजन 2-3 बार करने का एटलीस्ट रखें, मतलब लास्ट 10 डेज में मिनिमम की फर्स्ट सेकेंड ईयर्स आप रिवाइज कर लें, और जो आपको लगता है आप भूल जाते हैं जैसे हाई सब्जेक्ट्स हैं और जो जैसे फार्मा हो गई या लास्ट दिन थोड़ी देर के लिए फॉरेंसिक पढ़ना, वो जरूर कर लें। स्पेशल टॉपिक्स आई वुडंट से कि मतलब ऐसे कुछ एग्जैक्टली। And I think the important thing is that I think he's rightly mentioned that before 2015 the AIMS pattern was very different, and if you go 6 years earlier also you will find a very different pattern. Like we've been following it for last 20 years. It's like पहले एक बहुत ही एक इरा होता था आप लोगों से पहले के समय, जब वो बोलते थे हैरिसन से पेपर आता था पूरा, मतलब ऐसा मेडिसिन प्रिडोमिनेंट आता था। फिर वो एक बार ऐसा शिफ्ट मारा कि फर्स्ट सेकंड ईयर की इंपॉर्टेंस बढ़ गया, फर्स्ट सेकंड ईयर ज़्यादा आने लग गया। एंड देन नाउ विद दी INI pattern again you will see some changes which have happened. So it's important to follow the trend but don't go too far back in time. मतलब वो दुनिया भी बदल चुकी है, तब की तो दवाइयाँ बदल चुकी हैं, उसका बहुत पीछे जाने का भी ऐसा एडवांटेज नहीं है। हाँ, सो अगर कोई 5-6 मंथ्स में मेडिसिन को 1 महीना दे रहा है, सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट गुड। मतलब मेरा ऐसा था कि मेडिसिन मतलब हमेशा से अच्छी थी और फाइनल ईयर्स तक इतनी पढ़ी हुई थी। सो यू जस्ट नीड टू कि जो जो पूछा जा रहा है बस वो, मतलब मेडिसिन में आपके कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हैं, आपको पता होता है कि क्वेश्चंस हो रहे हैं, और वो ऐसा बहुत ज़्यादा भयानक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं मेडिसिन में। अगर जो क्वेश्चन पूछते हैं ECG मोस्टली इमरजेंसीज, तो वो यानी आप उतनी देख के जाएँ, मतलब और अगर आपको पता है कि आपके यानी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस तरीके से। तो आपको देखना होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं। पूरा मेडिसिन अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो माइनर सब्जेक्ट्स इनके जल्दी हो जाएंगे, और जो क्वेश्चंस यानी हो सकते थे वो नहीं हो पाएंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा। Any advice for future DAMS-onians? Like you were a DAMS-onian and you were attending your foundation classes, and any advice for future DAMS-onians regarding, you know, maybe how to attend a class, or you know, making your own notes, any particular So thing you want to उस समय जब बनाते हैं, मतलब उस समय जब पढ़ रहे होते हैं, सो मतलब जब क्लास हो रही होती है, सो उस समय मतलब वीकेंड पे क्लास हो रही होती है, सो यानी 12 आवर्स के लिए बैठना मुश्किल होता है, नोट्स बनाने का मन नहीं करता है। बट द थिंग इज कि वो नोट्स उस समय बना लो, मतलब भले ही मतलब जैसे भी मूड से बनाना है उस समय बना लो अच्छे से, मतलब क्योंकि वो एक बार बन जाते हैं तो फिर आपके पास रिसोर्स होता है, और एक अच्छा रिसोर्स होता है जिसपे आप बाद में उससे पढ़ सकते हैं। बाद में फिर से नए नोट्स यानी कहीं से खुद से नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब सो अगर नोट्स आराम से बना लो। रिवाइज करने का होता है कि मैं सच बोलूँगा कि मैं रिवाइज नहीं कर पाता था, बट मुझे नहीं लगा कि उससे उतना नुकसान होता था, क्योंकि जब वो पोस्टिंग चल रही होती थी तब मैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ लेता था, तो वो समझ में आ जाता था, ऐसे समझने में कोई वो नहीं। तो इम्पोर्टेंट है कि नोट्स बना लो, मतलब sorry. And which branch are you wanting to take? Medicine. That's great. And any future plans or anything you want to share today in this forum? I have interest कि मतलब I think कि I don't think कि as of now कि I want to specialize, मतलब that may be an early thought, but as of now I don't want to specialize, मतलब super specialize like after internal medicine. So internal medicine I want to practice as any whole, matlab that, and I want to work in for some time at least in the places like NGOs who are working in the like Chhattisgarh, Maharashtra, like that. It's actually very noble thought. And important thing is that medicine has its own joy also. When you become tunneled, sometimes you miss the joy of an unknown patient. And I think that is very noble thoughts by a very intelligent student. So Adarsh, now I will give you the forum to say anything motivating to the students, or anything motivating to the listeners, anything you want to say, anything that you think generally helps to be the high achiever. I won't say कि मतलब कि I aimed for rank 1. So मतलब अगर आप सिर्फ 1 या उसके लिए सोचते हैं तो आप पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है.
सो द इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से कि स्ट्रैटेजी वाइज जो मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी तरीके से भी पढ़ रहे हैं, जो सीनियर्स या टीचर्स ने स्ट्रैटेजी जिस तरीके से एग्जाम क्लियर होते हैं उस तरीके से आप कंसिस्टेंटली पढ़ें अच्छे से, तो यू वुड गेट गुड रैंक्स, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बहुत ही अच्छी बात है. एंड आई थिंक ऑन दिस नोट आई विश यू ऑल द बेस्ट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऐसा ना सोचो कि वन ही लानी है, ये बहुत बड़ा प्रेशर है. ऐसा ना सोचो, बेस्ट करने की सोचो, अपने आप आएगी रैंक. लेकिन ये मत सोचो कि वन ही लानी है. आई हैव सीन स्टूडेंट्स एंड देयर मेंटल हेल्थ सफर बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज आई मीट स्टूडेंट्स कहते सर वन ही चाहिए. मैं बोला टू में क्या खराबी है, अभी थोड़ा सा अच्छा पढ़ने की सोचें. एंड आई थिंक दैट इज गुड थिंग दैट हैज कम आउट ऑफ अ टॉपर के अपने ऊपर इतना प्रेशर भी मत डालो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए बात, है ना. सो लेट्स फोकस ऑन डूइंग आवर बेस्ट इज द मैसेज बाय डॉक्टर आदर्श. On this note, I wish him all the best for his future. Thank you, sir. Want to take this opportunity to congratulate you Thank you, sir. for your future. I want to, convey this to your parents also, and on behalf of the entire DAMS faculty team also, all the teachers that you mentioned, and even if you have not mentioned, behind the scene teachers who make the question banks, test, everybody is very, very proud of your achievement. I wish you all the best. God bless you. Stay positive and keep rocking. If is your Anupama ma'am also. Yeah, Anupama ma'am, yes. Anupama madam is actually one of the gems actually. So physio last time में मतलब 3-4-5 घंटे में करनी होती है, so that is very wonderful resource, I would say. So finally we will make a quick V sign and best of luck with her. God bless you. Thanks. Congratulations.